Hello my dear students, ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର friend again ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତ ଆଫ୍ଟର ଦ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଲାବସ୍ फ्रेंड ଆମେ एज यूजुअल MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करू। तो ଏବେ ଆସନ୍ତୁ फ्रेंड ଆମେ MCQ प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट କରିବା। तो आज प्रैक्टिस सेशन 1 रे फ्रेंड ଆମେ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग सिलेबस रो OPSC एग्जाम रे प्रीवियसली फ्रेंड जहाँ सब क्वेश्चन आछि सब को फ्रेंड हम वन बाय वन हमें डिस्कस करबा। ओके, तो फ्रेंड लेट मी टेक यू टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Two 1 mm thick steel sheet are to be spot welded, that means spot welding कथा से फ्रेंड ये हमको कहूची। तो दीटा फ्रेंड प्लेट अच्छी स्टील रो जार थिकनेस हमको देछि फ्रेंड 1 मिलीमीटर्स एट ए करंट ऑफ 1000 एम्पियर। तो 1000 एम्पियर फ्रेंड करंट सप्लाई करा जाइछि। एज्यूम इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 200 माइक्रो ओम। रेजिस्टेंस रो मूल्य फ्रेंड हमको दे दीछि 200 माइक्रो ओम एंड करंट फ्लो टाइम इज 0.2 सेकंड। तार अर्थ होछि फ्रेंड जो करंट फ्लो हैला ओनली 0.2 सेकंड पर्यंत ही फ्रेंड करंट हमरो फ्लो हैला। हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज केते, ए प्रोसेस रे फ्रेंड केते हीट जनरेट हेछि तार मूल्य फ्रेंड क्वेश्चन रे हमको पचारछि। ओके, तो वेरी वेरी फ्रेंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एटा फ्रेंड मैकेनिकल लेक्चर एग्जाम 2024 पेपर रो क्वेश्चन। तो फ्रेंड कोन देछि देखंतु, फर्स्ट देछि हमको फ्रेंड थिकनेस, लेट अस से दिस इज टी व्हिच इज 1 मिलीमीटर्स। करंट फ्रेंड दे देछि जोटा के आई बोली फ्रेंड लेखु व्हिच इज इक्वल्स टू 1000 एम्पियर। रेजिस्टेंस हमको देछि फ्रेंड 200 माइक्रो ओम, दैट मींस फ्रेंड 10 टू द पावर -6 ओम। टाइम फ्रेंड दे देछि हमको केते 0.2 सेकंड। तो जितने स्पॉट वेल्डिंग पढ़ी फ्रेंड आम गोटे फर्मूला लिखी तो फर्मूला फॉर हीट जनरेटेड Hg इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ओके, वैल्यू गुड़ा फ्रेंड पुट करदेवा। आई रो मूल्य केते फ्रेंड 1000 रो स्क्वायर, रेजिस्टेंस रो मूल्य केते फ्रेंड 200 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई टाइम रो मूल्य केते फ्रेंड 0.2। ओके, तो फ्रेंड इतनी सब कैलकुलेशन न करी आम ऑप्शन को आसनु देखा। ऑप्शन अच्छे फ्रेंड 20 40 50 100। तो फ्रेंड 100 गुड़ा जहाँ रही तो गुणन कले 100 हम कि 200 इंटू फ्रेंड 0.2 करुचे आम आंसर पाइबा फ्रेंड 40 है ना नहीं। सो दिस विल बी फ्रेंड 40 जूल्स। 40 जूल्स विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये अनुसार जो देखा फ्रेंड आम फाइनल आंसर ये आसीज ऑप्शन बी which is 40 joule। ओके, तो प्रॉब्लमेटिक दृष्टि फ्रेंड ए टाइप रो क्वेश्चन फ्रेंड स्पॉट वेल्डिंग रो एग्जाम रे आपण पई एक्सपेक्टेड रहिबो। ओके, तो सिंपल फार्मूला फ्रेंड हीट जनरेटेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई मैंने हला करंट, आर मैंने हला रेजिस्टेंस, टी मैंने होची वेल्डिंग टाइम और द टाइम ड्यूरेशन इन व्हिच इज करंट इज पास थ्रू द प्लेट्स। क्लियर? ओके, तो लेट मी फ्रेंड टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम कास्टिंग फ्रेंड देजी मिश्रण इन ए कास्टिंग डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू। तो आम पढ़ी फ्रेंड कास्टिंग डिफेक्ट पढ़ी मिश्रण, कोल्ड शॉट, ब्लो होल, स्काब, ब्लिस्टर। ओके, तो से पचार फ्रेंड मिश्रण जो कास्टिंग डिफेक्ट अच्छी से हेबार कारण कौन? वेरी हाई पोरिंग टेम्परेचर, इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टेन मेटल, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय लिक्विड मेटल, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द मोल्ड कैविटी। तो अपने जितने मिश्रण विषय में डिस्कस करते फ्रेंड आम पढ़ी मिश्रण और कोल्ड। तो मिश्रण अर्थ हो फ्रेंड अनेबल ऑफ मोल्टेन मेटल टू फिल द मोल्ड कैविटी। तो मोल्ड कैविटी को फ्रेंड जदि आम मोल्टेन मेटा फिलअप न कर पारा से डिफेक्ट को कहा जाए फ्रेंड मिश्रण डिफेक्ट। तो तार बेसिक रीजन हो फ्रेंड लो परमिएबिलिटी, रैमिंग प्रोसेस और फ्रेंड जस्ट तार सिमिलर डिफेक्ट होची कोल्ड शॉट। कोल्ड शॉट आम पढ़ी फ्रेंड इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल। तो फ्रेंड ये जेहेतु परमिएबिलिटी कि रैमिंग कौन से ऑप्शन ना तेणु फ्रेंड मन रखु कोल्ड शॉट आमर जो मिश्रण रही दीज आर इन सिमिलर टाइप ऑफ डिफेक्ट। माने फ्रेंड आम यदि चाहिए मिश्रण जो डिफेक्ट रही से फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल भी फ्रेंड गोटे रीजन हो पार। ओके, तो फ्रेंड आपड़ जी विथ द ऑप्शंस बी which is called insufficient fluidity of the molten metal। तो यदि मोल्टेन मेटल फ्रेंड फ्लूइडिटी लेवल कम अच्छी तो आप जो डिफेक्ट देखा फ्रेंड आम मिश्रन्स बोलिकी कहीपर। किंतु डिफेक्ट फ्रेंड कौन? डिफेक्ट इज अनेबल ऑफ द मोल्टेन मेटल टू फिल द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड मिश्रन्स। बुझिपारे फ्रेंड? ओके, चलू लेट मी टेक यू टू द थर्ड क्वेश्चन। ग्रीन सैंड मोल्ड इंडिकेट्स दैट।
तो आम पढ़ी फ्रेंड ग्रीन सैंड मोल्ड ड्राई सैंड मोल्ड तो ग्रीन सैंड मोल्ड ड्राई सैंड मोल्ड रे कौन फरक थिला ग्रीन सैंड मोल्ड फ्रेंड कौन हुए वाटर वेपर रो परसेंटेज रही है जोटा फ्रेंड मॉइस्चर बोली कि कहू ड्राई सैंड रे कौन करा जाए फ्रेंड ग्रीन सैंड को अगेन हीट करा जाए और से थ्रू मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करा जाए ताको कहा जाए ड्राई सैंड तो फ्रेंड किंतु क्वेश्चन को पचारि ग्रीन सैंड मोल्ड इंडिकेट दैट जदि आपन कहला ग्रीन सैंड मोल्ड तो आपन कौन बुझे मोल्ड इज ड्राइड एटा तो भूल कथा फ्रेंड कारण से वाटर वेपर थाए mold is green in color बिल्कुल भी नुहा mold contain moisture yes that is right friend कारण green sand रे हमारा moisture content थाए all of the above तो friend C will be your correct answer because the green sand mold indicate that mold contain moisture okay then friend next question for you gear cutting on a milling machine using an involute profile cutter is called तो फ्रेंड आम मिलिंग ऑपरेशन विषय पढ़ी विभिन्न प्रकार स्ट्रेडल मिलिंग प्रोसेस एंगुलर मिलिंग एंड मिलिंग बॉल मिलिंग स्लॉट मिलिंग विभिन्न प्रकार मिलिंग ऑपरेशन पढ़ी और लास्ट फ्रेंड आम पढ़ी गियर कटिंग प्रोसेस जो थे मिलिंग मेसीन साहाଯ୍य फ्रेंड आप चाहिए गियर टीथ को भी कट करेंगे किंतु क्वेश्चन फ्रेंड पचारूँ जो गियर कटिंग करवा यूजिंग ए मिलिंग मेसीन कौ प्रोसेस बोली कहुए तो फ्रेंड ऑप्शन आम पाखे अच्छी गियर फॉर्मिंग प्रोसेस शेपिंग प्रोसेस गियर जनरेटिंग प्रोसेस हाईली एक्यूरेट गियर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस ओके जब फ्रेंड ऑप्शन हिसाब से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर ट्राई करें फ्रेंड हाईली एक्यूरेट गियर प्रोड्यूसिंग दिस इज रॉन्ग बिकॉज हबिंग प्रोसेस होची फ्रेंड हाईली गियर कटिंग एक्यूरेट प्रोसेस गियर जनरेटिंग कारण गियर को डायरेक्ट डिफरेंट जनरेट दैट इज नॉट पॉसिबल इन ए मिलिंग ऑपरेशन ओनली गियर टीथ को कट करें सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग डी इज ऑल्सो रॉन्ग शेपिंग प्रोसेस दैट इज रॉन्ग फ्रेंड शेपिंग प्रोसेस में यहाँ पर शेपर मशीन फ्रेंड व्यवहार करा जाए सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन व्हिच इज कॉल्ड गियर फॉर्मिंग प्रोसेस तो जदि फ्रेंड आप मिलिंग मशीन इनवॉल्व प्रोफाइल टीथ साहाय्य कट करुँच इन ऑपरेशन इट इज कॉल्ड गियर फॉर्मिंग प्रोसेस ओके Then let me take you to another question number 5. In metalworking, which machine tool is primarily used for turning operation? एटा आपण समस्त फ्रेंड मते आंसर करि परिबे कारण हम जानि छे लेथ मशीन हमर यूनिवर्सल मशीन जाको टर्निंग मशीन बिले बोली कहा जाए और ताको फ्रेंड यूनिवर्सली टर्निंग ऑपरेशन पई फर्स्ट व्यवहार करा जाए तो फ्रेंड टर्निंग जदि देछि फ्रेंड हम आखि बुझी की ऑप्शन दे परिबे ए व्हिच इज कॉल्ड लेथ मशीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन टी टेक्निकली क्वेश्चन इन ड्रिलिंग ऑपरेशन व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द रेशियो ऑफ कटिंग स्पीड टू द टूल डायमीटर ओके तो आप आसतु टी आम डिस्कस करवा डिटेल रे फ्रेंड आम जो मेसीनिंग पैरामीटर पढ़ी आम कौन कौन पढ़ी आम फ्रेंड फीड विषय पढ़ी आम डेप्थ ऑफ कट विषय फ्रेंड पढ़ी कटिंग स्पीड विषय आम पढ़ी आउ फ्रेंड आम मटेरियल रिमूवाल रेट विषय पढ़ी हाँ ना नहीं ये क्वेश्चन फ्रेंड कहला व्हाट इज द रेशियो ऑफ कटिंग स्पीड ओके डिवाइडेड बाय टूल डायमीटर तो फ्रेंड आप मन पकातु कटिंग स्पीड को आम लिखुले फ्रेंड VC टूल डायमीटर को आम फ्रेंड लिखुले D सो VC डिवाइडेड बाय D तो फ्रेंड अकॉर्डिंग टू द रूल आम पढ़ी कटिंग स्पीड रो फार्मूला VC इज इक्वल्स टू पाई DN डिवाइडेड बाय 1000 तो सिंपल फ्रेंड मैं लिखि पारे कि VC डिवाइड बाय D VC इंटू 1000 या को दुई वजन कर दबा एटी फ्रेंड आसला D इंटू पाई इज इक्वल टू N लिखिपारे फ्रेंड और यदि फ्रेंड कांस्टेंट टर्म को छाड़ देबे मैं लिखिपारे कि VC डिवाइड बाय D कैन बी एक्सप्रेस एज N कारण दी जन का रेशियो पचारे फ्रेंड सो ए VC डिवाइड बाय दैट मींस कटिंग स्पीड बाय टूल डायमीटर N हो जे हमर फ्रेंड स्पिंडल स्पीड बुझे पाले फ्रेंड तो जदि हमको फ्रेंड पचारला व्हाट इज द रेशियो ऑफ कटिंग स्पीड डिवाइड बाय डायमीटर वी कैन गिव द आंसर एज स्पिंडल स्पीड ओके देन फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच मिलिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व्स कटिंग ए नैरो
shallow groove into the surface of the workpiece. Okay, तो आपन रिकॉल करने पड़े फ्रेंड आम पढ़ी मिलिंग मशीन ऑपरेशन एंड मिल बॉल मिल स्लॉट मिलिंग एंगुलर मिलिंग स्ट्रेडल मिलिंग गैंग मिलिंग से सब को रिकॉल आपन करा पड़ो ये जो पचारा को मिलिंग ऑपरेशन रे फ्रेंड आप जो वर्कपीस रही तार सरफेस रे हेलिकल ग्रुप्स करें सैलो नैरो ग्रुप्स कट करें. ओके तो आप मन थी दिस विल बी योर एंड मिलिंग प्रोसेस. तो एंड मिलिंग साहाଯ୍य फ्रेंड एंड मिलिंग कटर साहाଯ୍य आम नैरो और सेलो ग्रुप वर्कपीस रे आम कट करें. ओके सो डी विल बी योर फ्रेंड करेक्ट आंसर. देन फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of milling cutter is designed for removing the material from the end of a workpiece? तो फ्रेंड से कहला को मिलिंग ऑपरेशन रे आमर जो वर्कपीस रही और मटेरियल रही तार एंड रु आम मटेरियल को रिमूव करि परिबा फ्रॉम दी वर्कपीस. ना ऑप्शन बॉल कटर तो आम पढ़ी फ्रेंड छाड़ी दिंतु. स्लैब मिलिंग आम जाने टी स्लॉट रे फ्रेंड टी स्लॉट सब कट करा जाए तो यहाँ तो हम नहीं. स्लैब मिलिंग रे अलग फ्रेंड स्लैब मिलिंग में पढ़ी आ स्लैब मिलिंग अन्य माने एप्लिकेशंस अच्छी. देन फ्रेंड रहा एंड मिल. तो एंड मिल रे ही फ्रेंड एमती गोटे प्रोसेस जो जगह आम एंड ऑफ द वर्कपीस को रिमूव करूँ से फ्रेंड ये जगह जो कटर थाए ताको एंड मिलिंग कटर बोलिकी कहुए. ये फ्रेंड आप मन रखी था. Here the cutter is called end mill cutter. कारण फ्रेंड ये गोटे वर्कपीस रो एंड पर्सन रु मटेरियल को रिमूव करि पारे. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंड मिल कटर. आ ये एंड जो इट इज कॉल्ड एंड मिल. ओके तो एंड मिल रो दीटा क्वेश्चन फ्रेंड देखो डायरेक्टली आसी फ्रेंड यही लिखिबार होची ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रो लेक्चर 2024 एग्जाम रो देना क्वेश्चन. ओके देन फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, what welding process uses a consumable electrode that also act as a filler material? यहाँ फ्रेंड मो मत आप समस्त फ्रेंड दे पारे. प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करते TIG MIG विषय फ्रेंड. TIG जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड व्यवहार करा जाए, व्हेरेज MIG जो मेटाल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो जगह कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड व्यवहार करा जाए. देखो तो डायरेक्टली लिखी दीजिए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड दैट आल्सो एक्ट एज ए फिलर मटेरियल. तो आम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड फ्रेंड जितने दरकार पड़े से निजे फ्रेंड फिलर मटेरियल भाया काम करे. तो आखि बुझी फ्रेंड मुझे लिखिपारि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर व्हिच इज कॉल्ड मेटाल इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस. ओके तो मन रखें फ्रेंड मेटाल इनर्ट गैस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. अब एमाने फ्रेंड कौन इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करती ड्यू टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन. जो जगह आम आर्गन और हीलियम इन जनरल फ्रेंड आर्गन रो यूज करा जाए टू क्रिएट एन इनर्ट एटमॉस्फेयर एंड प्रोटेक्ट द वेल्ड मेटल फ्रॉम द ऑक्सीडेशन. ओके सो डी विल बी योर फ्रेंड करेक्ट आंसर. देन फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाउंड्री ऑपरेशन what is the term used for the process of creating a cavity in a sand mold to perform the casting? एटा आप समस्त आंसर दे पारे. से कहूँ कास्टिंग रे को टर्म माने को टर्म को कह जाए जो थे आम गोटे मोल्ड कैविटी बनाऊ आ कास्टिंग प्रोसेस को माने कास्टिंग प्रोसेस को करूँ से फ्रेंड टर्म को कौन कह जाए? मोल्डिंग, कास्टिंग, कोर मेकिंग, पैटर्न मेकिंग. ये तो फ्रेंड कोर मेकिंग पैटर्न मेकिंग सेमती देखिले ही आप ऑप्शन रिमूव हो कारण कोर आउ पैटर्न रो मोल्ड कैविटी बनवार किसी ना मोल्ड कैविटी रो यूजेस रे व्यवहार करा जाए. तो दीटा ऑप्शन फ्रेंड बचिला मोल्डिंग और कास्टिंग. तो फ्रेंड से कही फॉर्म ए कास्टिंग. तो कास्टिंग बनवा को दैट मीन्स वी कैन गो विथ ऑप्शन 1 व्हिच इज कॉल्ड मोल्डिंग ऑपरेशन. तो जगह फ्रेंड गोटे मोल्ड कैविटी को डिजाइन करा जाए और देन फ्रेंड कास्टिंग प्रोसेस से परफॉर्म करा जाए. हाँ ना नहीं. सो दिस इज द answer. Then another question, wax pattern is used in एटा फ्रेंड आखि बुझी आप समस्त आंसर करि परिबे. इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सेल मोल्डिंग, डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. We all know that wax pattern is used in the investment casting process which can be also called as lost wax process. ओके कारण हम जानी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को लॉस्ट वार कास्टिंग प्रोसेस बोली की भी कहा जाए. तो वैक्स पैटर्न कोड व्यवहार करा जाए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग रे व्यवहार करा जाए. देन फ्रेंड लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेक्स कास्टिंग इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील और कास्ट आयरन पाइप्स ओके तो फ्रेंड देखो मेटोलॉजी तो मेटोलॉजी भी फ्रेंड सेम सिलेबस रा तो तार 2024 लेक्चर पेपर क्वेश्चन को कास्टिंग प्रोसेस रे फ्रेंड आमे पाइप्स स्टील पाइप्स माने कास्ट आयरन पाइप रो मैन्युफैक्चरिंग करि परिबा देखो फ्रेंड ऑप्शन अछि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग सेंट्रीफ्यूगल डाई और स्लॉस जदि फ्रेंड आपण आंसर जान नांती ऑप्शन हिसाब से देखियो देखंतु डाई कास्टिंग तो फ्रेंड लो आउ हाई मेल्टिंग पॉइंट पर व्यवहार करे सी एठी एलिमिनेट हो गला स्लॉस कास्टिंग फ्रेंड आपन मन थिबो होलो प्रोडक्ट रो मैन्युफैक्चरिंग व्यवहार करे तो डी ऑप्शन फ्रेंड कैंसिल हो गला बंचिला इन्वेस्टमेंट आउ सेंट्रीफ्यूगल तो हम जानि जे फ्रेंड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को हाईली इंट्रिकेट आउ कॉम्प्लेक्स शेप रो कास्टिंग रे व्यवहार करा जाय तो ऑप्शन फ्रेंड बंचिला बी आउ फ्रेंड मन रखंतु सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन पाइप तो फ्रेंड आखि बुझी कि एटी आपण बी ऑप्शन को क्लिक करि परिबे ओके ता अर्थ फ्रेंड आपण मन थिबो हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग पढिथिले हियर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस कारण फ्रेंड आम रोटेट करूँ आपड़ जब मन थो फ्रेंड रोटेट हवा द्वारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हुए से फोर्स माध्यम वेल्डिंग हुए तो या फ्रेंड सॉरी से फोर्स माध्यम फ्रेंड ये आम मोल्ड कैविटी प्रिपेरेसन करके मोल्टेन मेटाल को पोर करूँ तेणु फ्रेंड या कह जाए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड अगेन फ्रेंड देखो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्वेश्चन सो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड इज यूज्ड फॉर डेक्स ऑब्जेक्ट तो को ऑब्जेक्ट पाई फ्रेंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड को व्यवहार करा जाए बढ़िया क्वेश्चन फ्रेंड एटा देखो देला हेवी ऑब्जेक्ट पाई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पाई एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पाई ऑप्शन डी फ्रेंड आपन को कंफ्यूज करिया पई देला बी एंड सी ओके तो मन रखे फ्रेंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स ओके सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जेमति फ्रेंड हमर पाइप्स हैला रॉड्स हैला एमान फ्रेंड मैन्युफैक्चरिंग रे व्यवहार करा जाए अलोंग द फ्रेंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस आउ तो फ्रेंड लिखुची बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को व्यवहार करा जाए ओके देन फ्रेंड लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 14 इन द डाई कास्टिंग प्रोसेस मोल्टेन मेटल इज फेड बाय तो अपने मन पकाते इधर हम डाई कास्टिंग पढ़ी डाई कास्टिंग को आम प्रेशर डाई कास्टिंग बोलिकी कहूँ जो जगह फ्रेंड मोल्टेन मेटाल को हाई प्रेशर रे मोल्ड कैविटी को इंसर्ट करा जाए एति आम जानी तो अपने ऑप्शन रे देखिबा फ्लो बाय ग्रेविटी फोर्सिंग इनटू द मोल्ड बाय प्रेशर बोथ ए एंड बी नन तो फ्रेंड आम जब रिकॉल करवा ग्रेविटी डाई कास्टिंग आम पढ़ी फ्रेंड ग्रेविटी डाई कास्टिंग रे आम जो मोल्टेन मेटाल अच्छे से ड्यू टू द ग्रेविटी फ्लो होता है किंतु डाई कास्टिंग प्रोसेस रे फ्रेंड हाई प्रेशर रे मोल्टेन मेटाल मध्य को मोल्टेन मेटाल फ्लो करा जाए सो ऑप्शन बी इज योर फ्रेंड करेक्ट आंसर तो फ्रेंड केतरा बुक्स रे मु देखिली बोथ ए एंड बी भी ऑप्शंस रे अछि बट फ्रेंड जदि आपण डिटेलिंग जिवे फ्लो बाय ग्रेविटी को फ्रेंड ग्रेविटी डाई कास्टिंग बोली के कहा जाए किंतु इट इज ए सिंपल फ्रेंड ओनली डाई कास्टिंग लिखी ओके आउ जदि फ्रेंड आहरी बुक्स को फॉलो करेंगे केतरा बुक्स रे जेहेतु पुराना काल रे फ्रेंड दीटा माने ए आउ बी साहाଯ୍य रे होतला तो ए आउ बी ऑप्शन भी फ्रेंड सेटी देते पारे किंतु फ्रेंड आपण कंफ्यूज हेबनी करेक्ट आंसर फॉर जदि खाली डाई कास्टिंग लिखाई जे फ्रेंड आंसर हे जबा आपनकर बी फोर्सिंग इनटू द मोल्ड बाय प्रेशर जदि फ्रेंड आपण लिखाई जे ग्रेविटी डाई कास्टिंग ताहाले फ्रेंड ऑप्शन ए आपण करेक्ट हो वेयर फ्लो बाय ग्रेविटी ओके तो फ्रेंड मेंशन में कर दोची so some books option is given as A and B okay किंतु इन पर्टिकुलर फ्रेंड आप देखिए B will be your correct answer okay so my dear student this is your MCQ session 1 so जो जगह फ्रेंड ऑटोमोबाइल मेट्रोलॉजी और मैकेनिकल क्वेश्चन गुड़ा कलेक्ट करके आपण आनिली आहुरी किछटा क्वेश्चन फ्रेंड मु कलेक्ट करिवि आहुरी दि तीनटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मु डेफिनेटली नेक्स्ट सीरीज रे आपण पई नै कि आसीबी ओके थैंक यू